अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा काम देख रहे होंगे। अभी के जैसे हम लोग का मेरी पहली वीडियो है तो ये होगी बग बाउंटी रिलेटेड। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, जैसे साइबर सिक्योरिटी में दो दो वो होती हैं फील्ड्स, आप कह लें मेन जो सब फील्ड होती हैं। एक होती है ऑफेंसिव साइड एंड वन इज डिफेंसिव साइड. In defensive side, there are multiple roles like SOC analyst and information security analyst and a lot of that. And the other is offensive side, in which offensive side हम लोग क्या करते हैं कि अटैकिंग वगैरह की साइड पे जा रहे होते हैं, या जैसे बग बाउंटी है, ये भी अटैकिंग साइड ही है। मतलब कि वेबसाइट्स होती हैं एक किसी प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड, या कहीं पे भी आप किसी वेबसाइट पे कोई बग फाइंड करते हो और फिर उसको कहीं अगर रिपोर्ट करो और फिर वो आपको उसके बदले में कोई रिवॉर्ड दें तो इट्स जस्ट बेसिकली अ बग बाउंटी। तो उसके लिए पर्सनली मैं जिस खुद प्लेटफॉर्म पे करता हूँ काम, वो है बग क्राउड। आपने खाली जाके सिंपली बग क्राउड सर्च करना है और लॉगिन कर लेना। मेरा सिंपली लॉगिन है, ये डैशबोर्ड पे है, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। और उसके बाद अगर आए इंगेजमेंट्स में, तो यहाँ पे ये जिनके साथ मैं इंटरेक्शन कर चुका हूँ, जिन वेबसाइट्स के साथ, अगर हम आए डिस्कवरी के टैब में, नेट थोड़ा स्लो है तो ये देखिए, इधर ये सारी वेबसाइट्स लिस्टेड हैं जो कि जिन्होंने अपने पूरे प्रोग्राम्स डिफाइन किए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये आपको खोल के दिखा दूँ। लेट्स से हम ये यूनिलेवर खोल लेते हैं। इन्होंने यहाँ पूरा डिफाइन किया हुआ है, ये स्कोप है। अब स्कोप मतलब इस की वेबसाइट टेस्टिंग की है, हमारा बेसिक फोकस जो होगा वो वेबसाइट टेस्टिंग पे ही होगा। तो जैसे ये है, इन्होंने यूआरएल दिया हुआ है ऊपर, इन स्कोप लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये वाले यूआरएल पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने दूसरा नहीं दिया हुआ आउट ऑफ स्कोप, अक्सर जो है आपको दूसरा खोल के दिखाऊं। स्कोप एंड रिवॉर्ड जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो आपने बग रिपोर्ट किया है, अगर वो P4 होगा, P4 कैटेगरी होगा, तो आपको $300 मिलेंगे। अगर P3 होगा तो 600, P2 होगा तो 2500, P1 होगा तो 6000, एंड अगर ये हुआ तो $15,000। ओके, सो ये इन्होंने डिफ़ाइन किया है। इन यूआरएल्स पे आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिक फोकस जो है वो वेब टेस्टिंग पे ही होगा। ये हार्डवेयर और आईओटी साइट पर नहीं जाएंगे हम लोग। अच्छा, और खाली इन यूआरएल्स पे रहना है जो उन्होंने यहाँ डिफाइन किए हुए हैं इन स्कोप में। अगर इसके अलावा कोई आप रिपोर्ट करेंगे, जैसे इन्होंने आउट ऑफ स्कोप लिखा हुआ है, तो इन पर अगर प्रेसिंग करेंगे तो इसमें आपको ये कोई रिवॉर्ड नहीं देंगे। और इनका रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा है, ये 2 से 3 दिन में आपको रिस्पांस कर देते हैं रिपोर्ट करने के बाद आपके फाइंडिंग पे। ओके, तो ये मैंने आपको उसका बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। बाउंटी बेसिकली तकरीबन बाउंटी आप रिवॉर्ड को ही कहते हैं, बग बाउंटी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट। ओके, तो हम स्टार्ट लेते हैं। कोई एक वेबसाइट उठा लेते हैं। मैं आज जस्ट जो है आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, कैसे जस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम पहले स्टार्ट लेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी है आपको किसी भी वेबसाइट के लिए। ओके, लेट्स से there are a lot of programs and very big organizations are also listed on there, as you guys can see.
अच्छा, एक प्रैक्टिस है ये कि अगर हम नीचे की वेब पेजेस पे आए तो इधर कम लोगों की रीच होगी, तो हमारे यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं टेस्ला भी इधर लिस्टेड है। ओके। ओके, लेट्स ओपन दिस। As you can see, 44 vulnerabilities are reported, and these guys will respond in at most 4 days. Okay, okay. This is you can see वेबसाइट टेस्टिंग एंड इन्होंने अपना वो भी बताया हुआ है किस पे बनी हुई है वेबसाइट। इससे आपको और आसानी हो सकती है। एंड ये जैसे देखें आप इधर लिखा है कि आउट ऑफ स्कोप वेबसाइट, इन पे आपने नहीं करना, इस पर कोई फ़ायदा नहीं, आपने खाली इन्हीं पे फोकस रहना है। लेट्स से हम कोई एक यूआरएल उठा लेते हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ नॉट रीचेबल, ट्राई अनदर वन। Let's reopen this. Okay, okay. There is website testing. Okay, as you guys can see, it will appear a page. Now what we have to do, here we got a page. Now what? So the first very simple vulnerability which you guys can report, I'll tell you what was that. Simply go to the sign up. Okay, sign up with email. Okay, full name, let's say Taha. Okay, okay. And in the email box, first you open another tab and search for mailinator.com. Okay, इट्स अ पब्लिक मेल बॉक्स। इसमें क्या होता है कि अब मैं कुछ भी लेट से लिखता हूँ यहाँ पे, हम्म, कहाँ नहीं, टेस्ट को
It's a very common, so let's do another TEST 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 game, let's say, and click on go. Okay, here is a box where we show all the mails that we are receiving. So our mail is testgame@mailinator.com. Okay, not Gmail, not email, not @Yahoo. No, it's @mailinator.com. If any website allowing you to sign up with and fake or public mailboxes email, then it's a security flaw which you guys can report and get a bounty. So let's check if there is a vulnerability in that website. Okay, so what's the email? Copy it. Email at rate. Okay, sorry. .com. And suggest a strong password. Okay, fill the captcha and let's check. Get started. As you guys can see, this website is not allowing us to create an account, so it's an legit website you can not report, but we'll find another website which allows us. So give me a second. पुराने निकालो जिसमें मैंने रिपोर्ट की हुई है. Here we have a website called kohils.com. It is also listed on the crowd. Okay, let's check this website. So we go to sign in. Okay, okay. Put on mail. Test game. Activate. Com. Continue. So here suggest me a password. Okay, no. Test game @123. Okay. Okay, that's the password. So create password. As you guys can see here, it allows me to proceed further. Wait. Save. Okay. First name. Test. Two. 02 28. Let's the new number. Okay. Okay, here you can see if I click on this
what you guys can see here. Test means we are successfully logged in, and it's a security flaw, and you can also report that. Okay, so that's our first video. If you like that, please like, share and comment, and subscribe also. And if you need more videos like that, so tell me in the comments, and what you guys need in further videos, you can also comment below. Thanks a lot.